So hello guys, welcome to Network Signal. So basically on today's video, this is a practice video. We can say that practice plus revision. Okay. So on today's video, we revision on which topic on subnetting. After that, some solve some questions. Okay. Let's say five. So let's go for the subnetting. So what is the subnetting? We can say that subnetting is the process dividing an address block into smaller subnets. There are some prefix classful addressing as well. 8, 16, 24. This is specific. They can't change. So what we can say on that addressing architecture? This addressing architecture called the classful addressing means the prefixes are not changeable on that classful addressing. We can say that. Then there is a one common value, the CIDR, classless interdomain routing. The CIDR throw out the rules of classful addressing, we can say that, and replace them with more flexible system. Like example 23, 27, 18, 25, 19, 7, 11. We can see that with CIDR means the classless interdomain routing, and enterprise can be assigned an address block. एक जो enterprise है वो assign कर सकती है an address block that can be divided, जो कि divide हो सकता है into networks appropriate sizes ओल्ड सबनेट्स, जिसे हम सब डिवाइडेड नेटवर्क भी कहते हैं, और सब नेटवर्क के अंदर वो डिवाइड हो सकता है. द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, जो डिवाइडिंग का प्रोसेस है, इसको डिवाइड करने का एक एड्रेस ब्लॉक को, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एन एड्रेस ब्लॉक इनटू सबनेट्स इज कॉल्ड द सबनेटिंग. जो एक एड्रेस ब्लॉक को डिवाइड करते हैं और जो प्रोसेस है उनको सबनेट में बनाता है, उससे कहते हैं सबनेटिंग. एन एड्रेस ब्लॉक इज इन रेंज ऑफ आईपी एड्रेस. जो एक एड्रेस ब्लॉक है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया एड्रेस ब्लॉक, we can say that we also use the address block here. So what is address block? Address block is just a range of IP addresses. It can be used to refer to a network before it has been subnetted. Subnetted से पहले भी हम उसे एक address block refer कर सकते हैं. There are two types of subnetting. There, I think one is VLSM and the FLSM. FLSM means stand for fixed length subnet masking, which creates equal size subnets. जो इक्वल साइज सबनेट्स क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं हम FLSM. एंड देयर इज वन मोर, वी कैन से दैट द VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, व्हिच क्रिएट्स सबनेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस अकॉर्डिंग, मींस हमें कितने नेटवर्क और कितने नोड्स को चाहिए. मींस वी कैन से दैट हाउ मेनी nodes you require. We can say that how many, what we can say that usable addresses, we can say that how many usable addresses you need on your network. So basically that's why we use for the VLSM, which creates subnets of different sizes based on the number, उनके नंबर के बेस पर of addresses needed in each subnet. Okay, so there is 5 types, I think 3 and 4 and 5. Okay, network address, the first address of a subnet. We can say that, I give you example like 192.168.1.0. It's a class C address. You can check here. It's a class C because the prefix on that there is a /24. After that, if we okay, just give me a second. I give you example. So 192.168.1.0/24. This is what network address. हम इसे यहाँ पर मेंशन कर देंगे, network address. Okay, then there is one more, broadcast address, the last address of the subnet with the host position of all 1. There is also mentioning all 0 means, sorry, cancel, just yeah. Now what is the meaning of all 0? There is a 24 subnet, means 25, means 2.5.2.5.0, this. Okay, then we go for the broadcast address, means this is this last address, not last usable, it's a last, so it is broadcast. Okay, if there is a 255.255.255.255, this is, means you count 0 now. There is a hexadecimal, there is a bit convertible,
like this. So you can convert. So that's how this is. This means not this, means kind of that. Okay. So like how you convert this, I think there is a to the power 0 like something. That's मैं ऐसे करता हूँ. My teacher told me that's the best way to do it. So this is the one we can say that. So that's a broadcast address. First usable address basically ये कह सकते हैं हम इसमें 1 बिट ऐड कर दिया नेटवर्क एड्रेस में, तो हमारा फर्स्ट यूजेबल एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस 255 में से -1 कर दिया. दिस इज आवर लास्ट यूजेबल एड्रेस. मैक्सिमम नंबर होस्ट, द नंबर ऑफ द आईपी एड्रेस इज अवेलेबल टू असाइन टू होस्ट, द फॉर्मूला टू द पावर y -2. मैं तो सिंपल ही करता हूँ. सपोज 256 -2, दैट्स इट, 254. दिस इज आवर यूजेबल host address in /24 means class C address. This is how I like it. After that, there is a regional internet registry. This, so class A 0 to 127, class A private IP address 10.0.0.0 to 10.255 and means आगे तक 25. After that, the class B 128 to 191. Okay, and the class B private address is 172.16.0.0 to 172.31.255.255. Class C private IP address is 192.223. Class, sorry, this is a public. Not one means this is a class C address, and the private address of the class C is 192.168.0.0 to 192.168.255.255. There is a class D address and the class C. Class D 4224.239, class C 4242.255. This is the prefix line subnet mask forward wait number of subnet max number of. I didn't remember all. I only remember from 24 to 32. और वो भी क्या क्या. Suppose this is the usable address. This we can say that this is the same as the slash value and .0.128. I simply normally what I can do. This is the 24. So I put 0. After that 128. I just plus 2. This is the usable address. What is the normal address? Plus 2 means 128. I simply add 128. After that I simply add 162. That's my how I do it. That's your way. You want to do. So let's do some practice of questions. Okay, so let's check it. Okay, this is our question. First just copy it. So it is asking एड्रेस नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस. ओके, सो इसका 27 का ब्रॉडकास्ट पता लगाना है. सो 24 सो मीन्स काफ़ी दिन हो गए क्यों है. लेट्स ट्राई करते हैं कितना टाइम में निकलता है. 24, 25, 26 एंड देन 27. इसमें आएगा 256, इसमें 128, यहाँ 64 आ जाएगा, यहाँ 32 मीन्स -2 कर देंगे. सो दे विल गिव व्हाट यूजेबल एड्रेस. So means 254, 126, 62 and 30. So 27 में आ रहा है 30 का गया. We can say that 32. Okay. So 0 to 31 we called 0 to 31. Okay. So 32 इधर and 64. And if we add the 32, so 3 6 or 3 96. और 96 में 32 और जोड़ेंगे तो 98 और 3 128 से बन जाएगा 127 तक. 96 to 127. और ये अगर एंटर द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस अपना बन जाएगा 10.213.88 एंड 127. आई थिंक /27. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू लेट्स चेक द आंसर इफ आई एम रॉन्ग और राइट. सो आखिर में 127 से आना चाहिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस. लेट्स ट्राई करते हैं. 213 क्या था अपना 127. लेट्स चेक द आंसर. या अपना सही है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. यहाँ पे पेस्ट करते हैं. तो इसका मीन्स से हमें प्रीफिक्स वैल्यू देना है. इसका आई थिंक प्रीफिक्स वैल्यू इजी होगा. ये 128 है तो 0 तो रहता 24 पे, और ये रह जाएगा अपना 25 है. स्लैश वैल्यू 25. इजी था वाला, हालांकि ऊपर वाला भी इजी था. 25 करेक्ट. 2 हो चुके हैं. लेट्स गो फॉर द थर्ड वन. जस्ट गिव मी अ सेकंड. इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ. Sorry for the disturbance, just give me a sec. Yeah, no, it's okay.
सो हमें क्या करना है, एंटर द फर्स्ट वैलिड होस्ट ऑन द network that the host this is so 2 to 4, okay, so 0, then one the 128, then one the 192, then 224, then 240, so ये 24 25 26 27 ये अपना स्लैश 27 वैल्यू है। एंटर द फर्स्ट वैलिड होस्ट, ओके, सो ये अपना 208 है। तो हमें अपनी अभी चेक किया था 32 बनता है 27 का, कहाँ गया, ये रहे 27 का 32 है। तो हम यहाँ 0 से काउंट करेंगे, 0 32 64, कितना बना था यार 64 के बाद में 96 आई थिंक, देन 128 था, तो 130 बन जाएगा, 30 और 160 बन जाएगा 32 में 192, चलो यार 4 आ जाएगा, 3224, देन 240 आएगा ना, 240 नहीं आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, सो दैट्स वी कैन से दैट, ओके। सो ये हमारा है 208, तो हमारा बन जाएगा फर्स्ट है लेडोस 225, लेट्स चेक इट। 225 बनना था ना, फर्स्ट वैलिड होस्ट, ठीक है देखते हैं। ओ इनकरेक्ट 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 भाई, अच्छा मैं मिस्टेक कर देगा मैंने, 0 32 64 96 में 32, हाँ ये भी सही है, ये 32 में 2 ऐड गया 30 और 60, ये भी ठीक है, 3.5 191 वो भी ठीक है, 192, तो यहाँ पर 224 है 32 6 2 8, ये भी ठीक है यार। तो इसमें इश्यू क्या है ना, एंटर द फर्स्ट वैलिड होस्ट ऑन दिस नेटवर्क दैट द होस्ट दिस, ये 2 to 4 ही तो है, 2 to 4 आई थिंक सही तो लिया मैंने यार, 2 to 4 27 सही तो है, तो फिर गलती का 208, ओ शिट यार, शिट शिट शिट, 208 यहाँ 224 और 255 के बीच में 208 थोड़ी आता है, इट्स कम इनसाइड दैट दिस पोर्शन, so the first valid host this 193, I forgot it, sorry, 193, sorry 3, yeah, so I think that's our fourth, then we go for the next one, this is the last for today. So where whiteboard, this is enter the subnet the host that belongs to सबनेट, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो सबनेट द होस्ट मीन्स इसमें स्लैश वैल्यू देनी है क्या, सबनेट मीन्स नेटवर्क एड्रेस देना है, होस्ट बिलोंग करता है, यहाँ से पता करना है कि कौन सा होस्ट, ओके गॉट इट। सो मैंने जैसे पहले बताया 0, ऐसे ही पता कर रहा था ना मैं, भूल गया पता है, ऐसे ही छोड़ो, 128 192 224 240 248 250 52 254 255, ये ना 24 25 26 27 28 29 30 31 32 या 42, और ये 24, ठीक है डन। तो 42 आता है इधर, तो मीन्स यहाँ पे कैसा आएगा, 256 128 64 32 16 और 8, ये हो ना, चेक करते हैं, यही है 8 की वैल्यू, ठीक है। तो हमें इस वैल्यू में देखना है, इस वैल्यू में जो उस बिलोंग कर देगा, ठीक है। सो हम करते हैं 0 8, फिर बीच में गैप, फिर गैप और फिर गैप, अब आते हैं ऐसे 168 प्लस 8 176, then plus 8 184, then plus 8 192, then plus 8 200, तो ये बन जाएगा अपना 191 तक, 99 सॉरी, 9 2 3 4 5 6 7 या 8 है, ठीक है। अब क्या करना है, एंटर द सबनेट द होस्ट, यह सब जाती नहीं, क्या सीन है यार इनका, ये अपना 175 तक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कहना क्या चाहते हैं,
192.0 मांग रहा है, क्या मांग रहा है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। 172.22 192.0 submit, correct है. Okay, so that's it for today. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe. Thank you.